Hello aspirants, welcome to the exclusive webinar on preparation strategy for science and technology for UPSC Civil Services exam. Before we dive in, let me introduce our distinguished speaker, Dr. Ravi P. Agrahari. Dr. Agrahari is a PhD from IIT Delhi and has an experience over 19 years teaching the UPSC Civil Services aspirants. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. I hope those webinar session I'm going to organize today on the platform of Mc Graw Hill, it will be very fruitful for all of you. As I found about various issues with all of you, and this is the reason I have written my book also, those published on the Mc Graw Hill. Myself, Dr. Ravi Agrahari, and I welcome to everyone on this edge platform of Mc Graw Hill. I hope so this session will be wonderful and very fruitful for everyone. And definitely what kind of hurdle you people are getting in regarding the science and technology. This webinar session will help you. Maybe somebody are not listening right now. Those people will listen these recordings. So this is my suggestion to everyone. Kindly share these videos to other guys also. Because what about the discussion I will do here in the sessions? Okay, it will be not here for this time. Means for 2024, even for rest of the coming years. And even the first of all, I would like to tell you regarding this book. And with the help of this book, I will try to support you about your science and technology preparations in UPSC examination. Either you are going for prelims or mains examination. So this is one of the PDF that I prepared for everyone. And this PDF you can also find out. So let us start. I hope it will be a wonderful discussion today. And at last, I will try to take your questions. And according to your demands, what about your suggestions, I will also try to carry in the last for the next edition of book, because your suggestion is required for me. So in question answer session, I will take your questions and I will take your suggestions. Because this is not my book, this is your book. And this book even got such quality because of your response. Today, this is a highly selling book in India. I think you all people know very well of science and technology. It's because of trust of you guys. And time to time, this book has given the wonderful response in every examinations. So let us start. Myself, Dr. Ravi Agrahari, and I'm taking a classes for civil service examinations from last 2 decades. And today webinar session is actually how to crack UPSC with the help of science and technology. First of all, in the beginning, I will like to discuss with you like what to do and how to do with general science and technology. In this regard, I will tell you like science and tech has not any NCERT. Even whenever you people start science, so the first and main problem is there is no background of technology regarding any basic books. Even if you people start your preparations just as a beginner. So history, polity, economy, geography, in every subject, people will tell you like start NCERT. Somewhere some teacher will tell start from 6th standard, somewhere start from 9th standard, and different on in various subject. But if you people go regarding science with NCERT book, for beginners, I'm telling you guys. So you all guys know very well, NCERT is not technology. Those NCERT book, either you start from 6th standard to 12th standard of NCERT, science, it's a science book. Here in this science book, you will get the physics, chemistry, and biology. But what actual the demand of UPSC? Actual the demand of UPSC is technology. So this is the reason technology is missing. And this is the reason I will tell you guys, if you would like to start the NCERT for the science book of 6 to 12, any standard of books, so it will be not much fruitful for everyone. Why so? Because I have prepared one of the PDF. And in this PDF, I have given you the strategy, even what about UPSC has done in the last 13 years, that all the question analysis I brought for all of you. And accordingly, those questions have done. So let us see that PPT, those I prepared for your prelims examination, like what about the demand of UPSC. This is the analysis that you can see on the screen. And here, these are various subjects. The left side, you can see a lot of the subject lists are given there.
In these subjects, one of the subjects for those purposes, I have written your book, Science and Technology book. For those purposes, I'm here to meet all of you. This subject is mentioned there, and very innocent syllabus lesson. Very innocent. Why? Because if you see the syllabus, guys, like 2 words of the syllabus UPSC has given you, the one general and second science. Okay, as very innocent syllabus is given, but if you see the question paper, guys, the question paper is not very innocent type. Okay, so here if you do analysis from 2011 to 2020-23. Okay, so in these 13 years of question paper, okay, the number of questions UPSC asks out of 100 in your prelims examination from general science, this is mentioned on the screen. And see, whenever you people see your book, these all the question wise questions are mentioned after the end of every chapters. Okay, so whenever you count number of questions, those book I have written in all the 11 chapters. So you will get these all the number of questions look those UPSC has in your examinations in last 13 years. Now question is why last 13 years? I just want to tell you guys, UPSC has started our prelims examination from 1979. From 1979 till 2023, if you see the question paper, guys, so you are wasting your time. Maybe you will get say like some of the question papers are available in the market where 30 years, 28 years question paper you are going to see. So you are wasting your energy. The pattern of prelims examination, the new pattern that introduced, it was from 11 onwards. So that is the reason I will recommend you 2011 to 2020-23 question papers. If you people see this last 13 years question paper, it will enough to open your eyes to understand the demand of UPSC. So that is the reason I brought 11 to 2020. And the first point that I will recommend to everyone, if anybody have a problem, okay, yeah, they are going to waste their own energy. Before 2011, 28 years question paper, they are going to solve and they're going very happy. Wow, I'm able to solve 28 years of question paper. So definitely you have wasted your time. My advice to everyone from 2011 to 2020-23, 2011 to 2020-23, kindly see, it will be enough to understand. Now, if you do the analysis that mentioned on the screen, guys, from 2011 to 2020-23. Okay, if you check, guys, in 2019, UPSC has the maximum number of questions from science. And minimum number of questions I have seen in 2021, these are 13. And in 2012, 13. So check about the UPSC question paper analysis from these 2011 to 2023. So I found in these last 13 years of new pattern of prelims examinations, 13 to 20 are the UPSC range. Range for what? Range for this subject. For those purposes, I'm here in front of you in this webinar session, means general science. So overall, I just tell you guys, like 15 questions on an average. UPSC always asked from general science. Last year, if you check 2020-23 question papers, there are total 14 questions. So first of all, how you will understand the importance of the subjects on the basis of number of question papers. And this is the first part of your strategy. Maybe you don't know what about the demand of the question papers in the prelims examination of the subjects and you start your preparations. This is the wrong strategy. So first of all, in the beginning, I'll tell you guys, you should have to create the interest on the subject on the basis of demand of UPSC. Maybe somebody have a more interest in history, maybe somebody have a more interest in geography, maybe somebody have a more interest in economy. So ultimately, the matter is here, guys, those subject you have an interest. What about the importance of the subject in the prelims and mains examinations? Suppose you have a more interest in the disaster management. You are giving more and more time for disaster management, but you should be very clear disaster management has no role in the prelims examination. Even if disaster management you see in GS paper 3, so disaster management have only one question in your paper at least every year. So ultimately you are wasting your time. So this is the reason in the beginning I brought the prelims question paper, and even simultaneously I give you the analysis of the mains question paper. Now it is not your choice. Now it is a UPSC choice. It means in these preparations, we will see like what kind of interest UPSC examiner have in various subjects. And that is the reason for this understanding. I brought this analysis of 13 years question paper as it is a new pattern of prelims examinations. Okay, so the first conclusion of this webinar, I think in the prelims preparation, you understood what about the role of me as a science and technology teacher, the book as a science and technology relevant materials. Now, further, if you go to the next part, guys,
in the prelims examination, what about UPSC syllabus? UPSC syllabus is just a name of subjects. A name of subject only general and science. That's why I told you in the beginning, very innocent syllabus UPSC has given officially in your prelims examinations. But this innocent syllabus as a general and science, question paper is not as a general and science. Okay, if you just see your question paper, guys, then you realize what actually UPSC is doing in your examinations. And that is very, very important. Literally, it is very, very important. Okay, everyone. Of general science, anybody will ask, if I ask anyone, guys, even in the classroom program, when I ask to many students, tell me what kind of subject you are doing the study in science. So many of engineering students raise the hand. Some civil engineering, mechanical engineering, electronic engineering, computer science, many of them. Later on, some of the people are telling some MMBBS, BDS, BHMS, BMS. And then some of the honors courses, somebody have done the graduation in chemistry honors, physics honors, mathematics honors. So ultimately, there are 20 plus subjects are coming in science. In history, have one subject, polity have one subject, polity have a different dimensions. History have a various dimension like ancient, medieval, modern, but science have a different subjects, and all the subjects have engineering and medical courses. So this is the main difficulty actually in science preparations. It is a combination of what 20 plus subjects. Okay, and the other part have not NCERT. So what kind of hurdle that UPSC aspirants are facing here, sir? That there is no NCERT for the technology. There is no proper even content and material part is also very important. Even I would like to tell you on this platform, this book I have not written in a day. The first edition of the book actually came in 2016. But the book that I have written in 2016, behind it, I have started the work from 2007 onwards. It means around 9 to 10 years I have taken to compile the content, to organize the content, and the proper in the cascading way, how to introduce, and then finally I have written a book. 80% of content every year same. 80% of content every year same. So agar you people are going to read out any books of my any of the from 1st to 7 of series, so 70 to 80% content will never change. Reason, it is a static part. And static part is actually missing in all the UPSC preparations. Entire UPSC preparation for science and technology. I found like you all aspirants, history, polity, economy, geography, social issues, this kind of subject. Throughout the year, you are doing preparation, and preparations. But with the science and technology, even one more subject that I have written a book on Mc Graw Hill publications, the environment, also have given the wonderful response. What is there in these subject? People are waiting in the last moment of time, any 100 page of notes. Even the number of questions are 15. And you are waiting for the 100 page of notes last moment of time. And that is the reason your merit is going to 40 and 42 and 43 and 45 out of 100 questions. Reason in the science, generally people 2-3 questions if they got from the current affairs, okay, but static part is totally missed. Even in this content, those book I have written there, not only brought only the static part, even simultaneously, I also brought you the current affairs parts also. This is the reason this book every year is going to update. Very fastly, I have done the updation. In 7 years, I brought the 7th editions. Okay, so again, my suggestion is here, guys, in the case of general science preparations, the first and main problem is there, then syllabus is not given. Second part, those number of questions, around 15 questions UPSCs are asking, not any of the static books that are available in the market. Even not even the NCERT has written the technology. But if you do the analysis of the question paper, guys, in out of general science, total subjects, if you categorize, so I brought these all the subjects, guys. In these all the subject, if you do the analysis, see screen further, guys. See screen further. I brought the analysis from 2011 to 2020-23. Further in this analysis, if anybody will ask about what kind of subject you must have to do. If anybody asks to me, sir, what kind of subject you must have to do in the science? So definitely I will write biology, physics, chemistry, technology. Okay, and general science is overall, it is your syllabus. So whenever you people do this analysis, guys, just see the last 3-4 years, 33, 22, 21, and 20. Okay, up to 18 or 17. Whenever you people see last 6-7 years of question papers, so total number of questions from the general sciences 14, and out of 14, all 100% questions from science and technology. If you see 2020-22 question paper, guys, total 18 question came, and all 18 question came from science and technology. Okay, I just want to tell you overall 18, 19, 20, 21, 22, 23. It's a very honest reviews, even of the question reviews, where in which subject for the science have a questions. So I found like 90% of questions, even 100% sometime even
Okay, 80% errors are there. So 90% of question in your general science is actually from technology wala part. And technology part means it is an applied part. And in this applied part have no question, guys. No books, guys. The basic books of NCERT are government based. And this is the main hurdle in UPSC preparation for all the aspirants. So main problem for the UPSC aspirant has no content available. Okay, and those book I have written, guys, it was not my ambition like I will write a one book for all of you. Student even forced me in their own journey. Okay, from 2006-7 onwards, student forced me. Sir, science and technology may have no contents are there. So you please do something else because you have a good experience of it. You have this background and all. And then finally, I have taken a decision to write the books. And finally, I got a opportunity to write a book with the Mc Graw Hill for science and tech. And finally, it is a wonderful response. And every year I got the news like every students there after the selection, after the examination, they are telling and they are praising it. Okay. And now on the social media platform, people are telling about this is the question came from this page number. This is the question came from this page number. And the best part is, guys, even whenever UPSC asks the questions, so it is also very difficult to find out this question is from which subject also. This is the problem generally for the newcomers. Those people are going to prepare in the beginning. So beginners have also one problem like to identify the question. This is a technology or this is some other questions. Okay, so this is the first help that I have given you guys. Like after the end of every chapter, when you see the question paper, automatically you will start to read the content. Okay, time to time I try to reduce the pages also. Okay, because somebody have a statement like a book is very thick, book is very thick. But I know very well, guys, from the childhood, when anybody said like UPSC preparation have need of lot of study. So our 400, 500 of pages are available and 15 questions are coming from that. So I think it is not a bad deal. It's a good deal for everyone. Here you are doing the preparation of million and million of pages where the contents are not coming. Here only I'm giving you 400 pages of content. Questions are coming. Okay, and the best part, even this time, I try to simplify more and more better with this book. That is the reason I have given an infographics. And after this infographics have a many and many response, wonderful response. Like in infographics, I simplify the content into various heading in the form of flow chart and diagrams and all. There are 70 plus infographics I brought it. The main purpose, what is that? In the case of book, it's not just to come and finish the syllabus. As the teacher also doing the same thing in the classroom, they are coming just completing the syllabus. The main part, a part of this, the teacher and books, how to create the interest. And to create the interest, the first time even Mc Graw Hill has taken a decision to brought the infographics in last moment of time. And the first book of the science and tech, which has given you 70 plus infographics. So how to create interest, also trying to increase in the book time to time. And the 7th edition, may now we brought the 100% of color book, 4 color first time. Okay, and here in this book, I want to tell you guys, when you people go in infographics, then just suppose I'm going to discuss about chatbots. So chatbots have a proper flow charts there. Yeah, you go with the example of various popular AI examples. The various popular AIs with the diagram I mentioned there. So ultimately, you identify, this is a Adam. Okay, this is identify about the Siri. This is identify Google Brain. Okay, so that simplicity in this book, I just brought it for all of you. Okay, so this is the first and very important analysis. You people got it. Like in this case, have no content available. So this is the only and only one book where you find the entire content. Now the next question. Sir, as the syllabus not mentioned of the science and tech of questions are, sir, what kind of subject, well, what kind of chapter we must have to follow? On that part, I will also come. But before it, I want to introduce the mains question paper and syllabus also. Prelim syllabus not mentioned, that is already proof. Only the general and science as a subject name mentioned there. But whenever you do the analysis of the question paper, as you can see on the screen, you find out the most important part in your preparation is the technology, and you got it. This analysis help you. This analysis help you. Further, you come into the mains. Mains, UPSC has given some syllabus. And if official UPSC given you, so definitely I'll show you the syllabus. In official main syllabus, what UPSC mentioned, I will like to read out that even. Science and technology development and then application and effects in everyday life. Achievements of Indians in science and technology. Indigenization of technology and developing new technology.
Awareness in the field of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issue related to intellectual property rights. How wonderful question it is. Means syllabus. Have you see guys in this syllabus anywhere particle physics mentioned? In this syllabus anywhere artificial intelligence mentioned? See, check. This is the official syllabus that UPSC has given. So you will find out like, no, artificial intelligence not there, particle physics not there, but UPSC asks the questions. If by mistake you paper read the book of science and tech that I have written there, particle physics and artificial intelligence, I already have written inside your book. And luckily UPSC asked the question in 2023 mains paper. What about the application of artificial intelligence in health sector? Tell me in your main syllabus, artificial intelligence not mentioned. But in your Mc Graw Hill book, it was already written there. But still people are telling current affairs, current affairs, current affairs. The another problem of the subject of the science and tech. They did not know why the satellite not fall down to the Earth's surface. And they're doing a preparation of science and tech. Even they never seen the question paper, UPSC asked the question, why satellite not fall down to the Earth's surface in 2011? And the another problem, people are waiting in the last moment of time, 100 page of notes. 100 page of notes means every coaching institution that they will provide you, you will go blindly follow them. But you did not know why satellite not follow, not fall down to the Earth's surface. UPSC generally asking about the difference between PSLV and GSLV. UPSC never asked in the last 13 years. I challenge you people, guys, go and check any of the name of launch vehicle UPSC as PSLV C44, yes, PSLV C37, yeah, PSLV C57. Never. But you go and check UPSC asked the question in 2018, difference between the PSLV and GSLV. A difference between the PSLV and GSLV is not a difference only in your period of time. At the time your elder brother, when he has given the UPSC, and even at the time of your papa and mama, if they have given the UPSC, that concept is still same. But the problem is that nobody have written a comparison of PSLV and GSLV. And what you people are doing, recent current affairs of PSLV C57, even launched this Aditya L1 to the PSLV C57. Okay, this is the problem. Actually, this is the problem. And this is the, and nobody is going to show you the question papers. And the another part is there, you are still not ready to believe. Like science and tech also 80% is the static parts. But don't worry, I have written the book. I will further tell you. And now around many million of the people started to follow them and they are ready to understand it. No, science and technology is also as a subject. You don't know what is a satellite and shuttle and you are going to do the study of the Gaganyaan. 90% of students, when I asked, tell me Gaganyaan is what? It's a satellite, shuttle, or spacecraft. People got confused. Somebody is telling a spacecraft, somebody is telling shuttle, but they did not know spacecraft or shuttle and satellite both. So shuttle, either you call it a spacecraft, both have same meaning. The problem is this, guys, basic understanding. So first and again, last advice to everyone, if you follow this syllabus, you will never write the answer about artificial intelligence exam application in the health sector that UPSC has in 2023. What about Bose-Einstein statistics? Bose-Einstein statistics not mentioned in your syllabus. Bose-Einstein statistics is the part of particle physics. But if you by mistake read the Mc Graw Hill book, and not I'm telling the 7th edition, go back, 3rd edition, 4th edition, 5th edition, artificial intelligence and important health sector was already written 5 years back. Bose-Einstein statistics UPSC as 2018, I have written in 2016. But the problem is there, go with the current affairs, UPSC. A big deal is in the market, whatever it is. But somebody is praising it after giving the examination. So I got the question from that. So difference of PSLV and GSLV, I understood very well. Now question is, whenever you go in the mains syllabus, prelims, I think you people very clear. How many questions in the UPSC from actually prelims paper? Similarly, in the mains paper, what about the role of science and technology? I have shown you your syllabus, but again, I'm telling you, don't trust your syllabus. I have a proof. I have a proof. And one more information I want to tell you guys. Science and technology is not as a pure science and technology. Science and technology UPSC also make as an interdisciplinary nature. And that is the reason during the book writing, I prefer the interdisciplinary nature of science and technology also. Definitely you will like to know, sir, tell me any example. How science and technology is also as an interdisciplinary. I'll show you. I'll show you. What about the 2 decades of my teaching experiences? 20 years already happened, guys. And nowadays the fees are going to come, whether 20 years of old students are coming in my class. Those years I already taught in the UPSC teaching. Okay, it's a good. So on the basis of my own experience, I'll show you some of the question, guys, okay, how UPSC try to connect the science and technology to make them interdisciplinary subject.
But first of all, you just see the screen, and on the screen you got it, guys. In the prelims, as around 15 question is the importance of science and technology. In the mains, around 40 to 60 marks is the importance of science and technology. So 40 to 60 marks out of 250 marks in GS paper 3. This is the role of science and technology. Now again I'm telling you. You people should have to create the interest on the basis of demand of UPSC. You people know very well in prelims 15 questions, where 80% to 90% question of science and technology is a static. 10 to 15 question, 20% questions, 10 to 15% or 20% of questions somehow is current related. Okay, current related. And you people are going to focus only current related of 2 to 3 questions, but you are going to avoid 12 to 13 questions. So here this book will help you. To how to connect the science and tech with the other interdisciplinary subject, here book will help you. In this book, actually, guys, this is the science and tech, but I have connected the science and tech with social issue also. Here in this book, I have connected the science and tech with IR also. I can give you some examples. Okay, and for that example, I'll go to the next PPTs that I prepared. This PPT will definitely give you all the ideas about science and tech. Okay, how the science and tech even connecting with the other subject, it will be proved. But I think mains, one more thing, mains I brought from 2013 onwards. Prelims I brought from 2011 onwards. Same answer, those I use in the case of prelims. Why 2011 to 2023 paper I have shown you? Because new pattern of prelims started from 11 onwards. And same thing, mains new pattern started from 2013 onwards. So this is the reason from 2013 to 2020-23. These 11 years of mains question paper, if you people see, around 40 to 60 marks of question UPSC in this. Okay, 40 to 60. I'm 40 to 60 marks is a good weightage, guys. You know, a single marks can change your destiny. Even in the mains examination, when my students are going to give the examination, and they just call me in the morning, even in the night also. And they ask me only one question. Sir, what I should do in the mains examination? I only and only advise them. You sit in the examination hall till last moment of time and try to search any of the question where is the chances to increase the single marks. If it is possible to write some content, because a single marks can change your destiny. Okay, I still remember one of my students, Pulkit Garg. Earlier he was a IRTS in 2014. He belongs from the IIT Delhi campus even. And he told me, sir, because of single marks, I got IRTS, neither today I will be IRS. In 2014, he has given this statement to me. And the next 2015, what happened? He got 28 rank. And finally, he's an IAS officer, and today he's a posting in a Uttar Pradesh cadre. So a single marks, guys, a single marks, he got the IRTS, neither he will be IRS. Even God blessing, like next year, he has done the hard work, even I got a 28 rank in 2020-25, Habibullah batch. So single marks even can change your destiny. And that is the reason in the mains examination, 40 to 60 marks, but you people cannot avoid. A single marks. Maybe guys, because of single marks, you could not qualify your mains examination. Because of single marks, you become as an IPS officer, neither you will be IAS officer. Now throughout the life, you must have to salute IAS officers. It's a protocol. Even as an IPS officer, if you promote and being as a DGP, so definitely your home secretary will be the IAS. In that moment, after still you have to salute to your IAS officers. So single marks, I'm telling you. Maybe because of single marks, you could not got the first rank. Because of single marks, you could not make a record of as a first ranker in the past in the history of this UPSC score, marks scoring. So the single marks you people cannot avoid. And 40 to 60 marks UPSC is giving in the science and technology. How you can avoid it, guys? Of course, no. So this is the reason science and tech for the mains examination equally very important. Reason 40 to 60 marks. And 40 to 60 marks is a huge number, guys. Okay, huge number, 40 to 60 marks. So you people cannot take a chance here in this case. Okay, now. This is the syllabus. And this syllabus, actually, I will advise to everyone. Kindly follow this syllabus. I have compiled your entire science and technology. Either you go for prelims examination or mains examinations. Only and only you just go with the 11 chapters. I still remember, guys, the first time in 2016 when book published, these 11 chapters was there. Today, again, the 7th edition in the market. Okay, 100% color infographic. Still have 11 chapters. 11 not changed. Chapter not changed.
It means these are the 11s from the last 7 years. I found here UPSC as a question, UPSC as a question. Even if by mistake anybody have a sixth, yeah, by luckily, I'm telling mistake and luckily both. It is your choice. It's a mistake, yeah, luckily you people take your decisions. If you people have, you go and check artificial intelligence in your book or not. Artificial intelligence is mentioned inside your book. And artificial intelligence application in the medical science, if you go into the AI startup India, you will get it. The answer is there. RTVT data lab I mentioned there. SIGTUPL I have mentioned there. Many examples are there, guys. But the problem is there, you people are following your syllabus. And if you follow your syllabus, so definitely you will miss these questions. Okay, so listen, I would like to read out the chapter. I want like you people always remember which chapters are required for UPSC examinations. Either you are going for prelims or mains. Agree, few people prepare these 11 chapters. I still remember, guys, when I have written the particle physics in this Mc Graw Hill book, coaching institution started to teach the particle physics. Neither earlier people did not discuss the particle physics. Okay, earlier people did not listen. I have written the quantum entanglements, UPSC as the quantum entanglements. But the problem is there, you people keep yourself busy in the current affairs. Quantum dots, this year Nobel Prize was given. But quantum dots, the first edition of 2016 book I have written there. And quantum dot is not the new topic. Quantum dots 4 decades ago, these scientists even has made it. But see, they could not get the Nobel Prize when they were young. They got the Nobel Prize when they were old. At the youngest time of period of time, agar they will get the Nobel Prize, they enjoy their own life also. What about the Nobel Prize? And those people are giving has taken a decision, they decide. But the quantum dots in the first edition I've written. You tell that is a current affairs. The problem is that nobody have written the quantum dots. If you go in the nanomaterial topic in the nanotechnology, quantum dots written there. CNT was the UPSC question in 2021. CNT was already written inside your book. But the problem is that when CNT is written inside a book you not read, you tell current affairs. Quantum dot 7 years back, I have mentioned inside your book, you never read. Quantum dot this year, Nobel Prize is given, you will tell current affairs. The problem of the science and tech is what that is the current affairs. But don't worry. Now people are listening. Now people are understanding because now this book reaches everywhere. Okay, now people, even their eyes are opened and they understood, no, science and technology is also as a static subject like a history, polity, economy, and geography. And one of the book is available in the market. Those have written static with all the current updates. Better you people take anybody have a 2017-18, the 7th, 3rd edition of book, you go and check quantum dot is there or not, you will get the quantum dot is there. And in which year people got the Nobel Prize of Chemistry Nobel Prize? This year, 2023, quantum dot, but quantum dot written there. CNT UPSC asked the question in 2021 and CNT was discovered in 2001. So sir, 20 years back CNT was discovered and a question UPSC is in 2021. Yes, but you said that is after 20 years, this is the current affairs question. Wonderful statement. After 20 years, we are telling this is the current affairs question. Quantum dot today, you will tell current affairs. Arey bacha, quantum dots always important. 4 years back, quantum LED TV available in the market, but you never know QLED TV is what. So 4 years back, why not you have seen the quantum dots? Quantum LED, even OLED UPSC already has seen your paper. OLED, I think UPSC question in 2017 around. Ab OLED TV, you are telling current affairs. QLED TV, you are telling current affairs. You people understood what I am telling in this discussion. Those science attack the people make a rumor and telling current affairs and current affairs. I just want to tell you the crack UPSC prelims. They are IAS officers, but they did not solve the UPSC question from science and technology. Reason 40-45 merits 3-4 question, polity 6-7 question, history 6-7 question, economy 3-7 question, geography, and few of them question you identify on the basis of elimination. 43-44 happen. Science attack 2 or 3 questions. But if you people will prepare science attack properly, so you will always save. Reason that 8 to 10 question extra marks that you are getting now, that will always save you. If you are getting a chance to history, politics, economy, geography, not going to qualify, so because of science attack, this 8 to 10 question, you are 100% safe. This is my suggestion for all of you, and that I will give you a recommendation. Please read this. Because I'm a person who is updating the book. I'm a person who is teaching the science and tech, who is telling the science and tech is still static. I'm a person who made the subject as a subject. Neither every coaching industry, they are telling the science and tech as a subjects. Oh, sorry, as a current affairs. And it is the proof also. And again, I'm repeating my words, guys. If you follow these 11 chapters, you will save. If you follow the UPSC syllabus,
so you will suffer. And another one, prelims have no syllabus, but still UPSC has all the question of science are taken in your prelims examination from these 11 chapters only. I read out. Always, definitely I read out. I want at least if one of the person, yeah, 1% of person those are listening today, agar they open your eyes. Ultimately, my lecture on this wiki, on this platform, okay, webinar session, that will be really very fruitful and will become very successful person. Because only one person, if this webinar session will understand actually the demand of UPSC, so I'll be very thanks to God even. Because one person and then one connect with the many person after selection, many person connect with us. Maybe not in 20 years, people understood in my teaching. Maybe next 20 years, maybe after gone of me in the coming future, maybe you people understand. No, science and technology also is a subject, is a static, and one of the person is there. Those have written the static in the book, and those person teach in the class as a static in the book. How interesting it is now. Sumio Ijima had discovered the CNT in 2001. Okay, and you people are telling it 2021 after 20, that is a current affairs. Very wonderful, wonderful. I think a total lobby is working behind the science and you are being part of this lobby. Okay, fine. Fake news. So now listen the chapter, guys. The one, science and technology in India. Second, energy. Third, space technology. Fourth, information and communication technology. Fifth, defense technology. Sixth, artificial intelligence, robotics and nanotechnology. Seventh, intellectual property rights. Eighth, particle physics. Ninth, biotechnology. 10th, health and disease with various immunization program. 11, miscellaneous topic. Okay, fine. Now come to the next part. Next part, what we should do in these preparations. Don't worry, in the last moment of time, question answer session is very, very important. I'm expecting like you will ask very wonderful questions and I'll definitely happy to give you all the answers. If somebody missed this webinar session, so kindly share to other friend also. Okay, my motive at least if for one person open the eyes, I will be successful, my webinar will become successful. So yes, in this strategy, the first part and very important part, like you should have to follow integrated approach. Integrated approach means you must have to prepare prelims, mains, interviews all. And this is the game of knowledge. I always said, guys, knowledge give a confidence to everyone. And if you have a knowledge now, nobody will stand in front of you. Even in interviews, I have seen, guys, that some of the people, not some of the people, guys, these numbers are 50% plus. They are doing the preparation of prelims only, and prelims only. And because of this prelims preparation only, they could not qualify prelims and 5 attempt over. A person who is coming and they understood like the person will give interviews also. The person is start to get a knowledge and on the basis of the knowledge is start to see the mains question paper, start to write it and try to identify the conceptual question that UPSC has in the prelims also. So that is actually in this preparation, those who are going to start from the first day, integrated approach is required. Those knowledge you are getting, now this knowledge you will defend in front of interviewer, guys. It's not like that only you people are going to prepare prelims. So this book is started from the interview kind of knowledge, means a knowledge. Second one, after the getting the knowledge, you were able to identify how to write the answers, mains answers. And then later on, you people will identify how whatever the question UPSC has, what about the information UPSC has given us on the basis of conceptual clarity that you people got for your write your mains, you will identify the prelims. So your preparation should be integrated manner. Knowledge give you interview on the basis of mains and on the basis of you can do analysis. So interview, mains and prelims, in that way you do preparation, guys. Okay, integrated manner. And exactly in that way I have written this integrated manner of book also. And even in this book now, in the last of this, I have given you all the mains answer of 7-8 years of UPSC question paper. Then in the last moment of time, I have given you some of the practice question paper for the prelims and mains also. Okay, this book is not for the prelims only. This book is for prelims, mains, and interviews, everyone. A single book. Conceptual clarity for the prelims and mains are very important. I have seen, guys, the mostly people from the beginning, they start to mug up the fact and figures. But UPSC is not the game of fact and figures. UPSC is the game of concepts. I'm expecting like you people remember always as a concepts. And third one, UPSC real question paper you watch. One more confusion and one more doubt that a student always have.
They are going to see all the coaching industry based questions, but they forget the coaching industry based question paper is developed by content developers, and content developers still they are giving a UPSC examination. Yeah, they could not qualify UPSC examination. They have given this even every coaching industries, they are giving an advertisement on the newspaper. I need a content developer, 40,000 to 40,000 rupees to few lakh rupees of salaries a content developer is going to take from the coaching industries. It's not a real question paper those UPSC examiner made. So that is the reason my suggestion, first and the last suggestion, kindly start to see your real question papers. Those question paper, this content developer still could not solve and they could not qualify UPSC. They have given interviews, they have given the mains examination, they finally could not qualify. So this is the reason my suggestion is that please see real question paper. It will open your eyes. Coaching industry, they can make any kind of questions. I'm also an IIT Delhi background. IITian, I'm also in among the IITians, but it does not, I can make any kind of questions. But why I'll make any kind of question? You should have to understand the demand of UPSC. And that is the reason UPSC real question paper, you must have to see. It will enough to understand. First, you people see it. Later on, if you get a time, you go and see any of the coaching institution. Even on the Edge platform, we are providing you many of the question papers. On the Edge platform, guys, those book I have written, now, here I have given you all the entire detailed answer why A is the correct, why B is the correct. First time, but it is not available in the book. It is available on Edge platforms. Edge platform that Mc Graw Hill has narrated, it is a wonderful platform, guys, and best for all of you. Here we are providing you the extra informations, extra content for everyone. Time to time, some of the videos I also made and provide on the Edge platform for everyone. That link you will get it there, guys. So that is the reason those scan code is there inside your book. After it, some of the code number, okay, code number. When you turn your page, backside is something written there. You just scratch them. Some of the coding number you get it. Don't share this code to anyone. You just use that code, and now you can access all the Edge-based services. These videos, those I'm taking here, these classes, guys, it will be also available free of course. That will be available there. Here you have to not pay of anything. Okay, so I think you people understood how your study should go in the integrated manner. You understood another part. Now, actually, I told you guys, UPSC asked the question in integrated manner. UPSC asked question in integrated manner. Integrated manner means prelims, mains, interview, everything integrated. How it is? See, guys. Some of the question, just a highlight, I brought it. Okay, 2016 mains. This is just to prove those ideas I want to tell you. At least it will help you to understand demand of UPSC. Some highlights: schemes and programs connecting with science and tech. Give an account of the current status and target to be achieved pertaining to the renewable energy sources in the country. 2016 mains. Discuss in the brief the importance of national program of light emitting diodes. You must have to know about government schemes and program, those brought here to boost up the LED services in India. DLP, Domestic Efficient Lighting Program. And later on, this name has been changed as another name that is called Ujala Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All. You people think so science and tech, and that is the problem. If you will not see the question paper, guys, you will never understand what is the demand of UPSC. 50% people that they already fail because they never know what is the demand. They outside of any of the coaching industry, every day give the one of the question, you are going to write the answer, but you never see the real question paper. So this is the reason I'm advising you. See the second question, 2018 mains. Discuss the work of Bose-Einstein statistics done by Professor Satyendranath Bose and show how it revolutionized the field of physics. Of Satyendranath Bose, though, you should not prepare because of UPSC not mentioned in your syllabus. UPSC not mentioned in your syllabus. Key particle physics you should have to prepare for the mains examination, but UPSC asked. For the understanding of Bose-Einstein statistics, you must have to know what is the Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate, for that understanding, you must know about the Professor Satyendranath Bose and Einstein. Okay, that it is a fifth state of matter, and fifth state matter of behavior activities. We are doing the study in the Bose-Einstein statistics. I started from exactly zero level, guys. First, you must know about fifth state of matter is what? Bose-Einstein condensate. Then the Bose-Einstein condensate behavioral activity we are going to check. Bose-Einstein statistics, because statistics are behavioral activities. So I started from zero level. It's not like that you have a technical background, you can understand the science and tech. Never, guys. Technical background, I am telling you, they still don't know technology, which is the demand of UPSC. This is the reason science and tech, either you are the humanity backgrounds, means not science background, yeah, science background, you all people are same, because UPSC need this kind of question, and this kind of question ke liye to everybody have to need a preparation now. If any of the biotic engineering students are coming, they know what about LED schemes and program, what about the renewable energy target of India? Of course, no. For that, you must have to
listen the science and tech. Here the science and tech is totally different. Another part. So both science and statistics, you people understood. Third one, these are just few examples to open your eyes, guys. Third one, describe the benefit of deriving electrical energy from sunlight in contrast to conventional energy generation. Okay, how solar energy is better than conventional. Conventional means like coal and petroleum type of product. And see, further the second part is there. What are the initiative offered by the government for the purpose? See, further UPSC has solar schemes and programs, solar tariff, solar rooftops, floating solar plants, photovoltaic systems, solar water pump, Jawaharlal Nehru Solar Energy Mission, under MNRE, what about the target? And in 2020-26, in COP26 meeting 2021, what about our Honorable Prime Minister has sent regarding the solar energy target that India will achieve by 2030. Total 500 gigawatt India will achieve through renewable energy by 2030, where 280 gigawatt through the help of solar energy alone. This kind of target you must have to remember with the help of various government initiatives and programs. You are listening like what? Science and tech, science and tech. Here, after the end of the science and tech is solar energy, where I discussed, I have given you all the schemes and program. I started from 2010 Jawaharlal Nehru Solar Energy Mission. Agar you will not listen, guys, in that way you will not prepare the UPSC, you will not write your mains answer. Okay, and this is the book where I have written in that way. Either you are going for prelims, you are going for mains. Even mains answer I have written, guys, in the end of this. Sometimes people are telling like book pages are more. Arey, book pages are only 400. 300 pages, the question paper, practice paper, UPSC prelims question paper, UPSC mains answer, and the last minute tables. The book to content is only 50% now. So agar book size is this, now the book is 50% content. This time I don't have it in front of me. It's somewhere in some Almiras. Okay, now I show you the content is just 50%. Again, the new generation have this much of mentality. They are waiting like anywhere the Lakshmikant book, somebody's are teaching in 14 hours. Okay, and today generation is like that. 14 hours of Lakshmikant book finished. Lakshmikant sir has written the book in 10 years, and you are going to finish the Lakshmikant sir book in 14 hours. A very interesting generation, like you people, I'm telling you guys. Lakshmikant sir has written the book in 10 years, 15 years. That person has given the full life. Okay, and you are going to finish the Lakshmikant book on the YouTube platform. 14 hours Lakshmikant finished. And see, billion years. अरे बच्चा लक्ष्मीकांत सर की तो एक book एक पेजेस समझने में 6 घंटे लग जाते हैं. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द न्यू जनरेशन. दे आर वेटिंग सर कोई पुड़िया है क्या? वो कोई पुड़िया दे दो सर 40 पन्ने की निकल जाए. लगो पुड़िया, पढ़ते रहो पुड़िया, पढ़ते रहो पुड़िया. Everybody, your parents told you, your teacher told you, UPSC need a hard work and dedication. बहुत पढ़ना पड़ता है. Everybody is telling. पर फिर भी ये बच्चे आकर 40 पन्ने का नोट्स ढूंढते हैं. और 40 पन्ने के नोट्स में तो फिर अगर you will only 40 pages of notes में, और वो 14 घंटे की लक्ष्मीकांत की बुक जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं, अगर उससे तुम लक्ष्मीकांत सर को पूरा समझ जाओ तो भैया why only you qualify UPSC? सिर्फ give me this answer only. Okay, whatever. You new generations. ये व्हाट्सएप से तो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले लोग हैं. किताबें पढ़ने की आदत खत्म कर दिया इन लोगों ने. आई स्टिल विल टेल यू वन ऑफ द स्टेटमेंट. I'll try to tell you in Hindi also. Maybe somebody's are Hindi. Okay, one day I sit with the Dabi ma'am. Dabi ma'am is the mother of Tina Dabi, Himani Dabi, है ना. उनके साथ में बैठा था. तो मैडम से मैं बात कर रहा था. मैंने कहा मैडम आपने तो कमाल कर दिया, और टीना को बना दिया, ये श्रिया को बना दिया. मैडम ऐसा कैसे आपने कर दिया? मतलब दोनों के दोनों, यानी आपके घर में ऐसी चीजें चल रही थी जो बहुत तरीके से चल रही, दोनों बच्चे IAS हो गए. मैंने बोला सर जानते हो, दिल्ली में ना मेरी ही बिटिया थी, टीना थी, जो कि लाइब्रेरी में जाके अकेला बैठकर किताब पढ़ती थी. क्योंकि नई जनरेशन के बच्चे किताबें पढ़ना भूल चुके हैं. ये मैं डाबी मैम की बात बता रहा हूँ. और जिन्होंने प्रूफ किया अपने बच्चों का IAS बनाकर, किसी को फर्स्ट रैंक बनाया, किसी को 16 या 18 रैंक बनाया. उस लेडी का कहना है नाउ, तो अब तो सी इज नॉट इन दिल्ली, अब तो सी इज शिफ्टेड इन जयपुर. ओके, तो उनका कहना है कि रवि सर मैंने अपने बच्चों को किताब पढ़ना बताया, क्योंकि नॉलेज किताबों से आता है, 10 पेज के नोट्स से नहीं, या यूट्यूब के वीडियो से नहीं. और यही चीज कलाम साहब भी कहते थे, अगर नॉलेज लेना है तो किताबें पढ़ो. किताबों की वैल्यू बहुत होती है. इसीलिए देखो हम लोग किताबें पढ़कर आए. तो जो नॉलेज जो किताबों से होता है ना बच्चा, वो कभी 40 पेज के नोट से हो ही नहीं सकता. बाकी चलो, इट्स योर जनरेशन, आप सब जल्दीबाजी में हैं, ले लो तो चल. सो नेक्स्ट वन, ये मैंने आपको वो चीजें बताई. और पता है वो लाइब्रेरियन क्या कहता था डाबी मैडम, एक ही बच्ची है जो पूरी लाइब्रेरी में आपकी बच्ची बैठकर किताबें पढ़ती है. यहाँ देखो लाइब्रेरी में कोई बैठा, और लाइब्रेरियन बड़ा खुश रहता था टीना से. कभी टीना डाबी से कभी मुलाकात होगी तो आप उससे बोलना रवि सर ऐसा कह रहे थे, क्या ये सही है? सी विल टेल यू इट्स ट्रू.
मैं वो अकेली बच्ची थी पूरी लाइब्रेरी में पढ़ती थी, क्योंकि बाकी जनरेशन तो यूट्यूब और व्हाट्सएप और उस पर बिजी रहता था ना। एंड सी प्रूव्ड इट, सी प्रूव इट। तो बच्चा किताबों से नॉलेज, कम पढ़ो किताबें, उसको 50 बार पढ़ो। टॉपर्स भी आपको कई कहते हैं अच्छी किताबें पढ़ो, 5 बार पढ़ो, किताबों से नॉलेज आता है। और आप मार्केट में जाकर किसी कोचिंग इंडस्ट्री का किसी टीचर का 40 पन्ने का नोट्स ढूंढ रहे हो, ओके, टेक अ रिस्क। 2020 में का भी मीन्स मैंने बता दिया, व्हाट इज द इनिशिएटिव ऑफर बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। ओके, ये भी देखो यहाँ पे बिग ब्लंडर्स, बस एंड की तरफ आते हैं। बिग ब्लंडर्स दोज यूपीएससी एस्पिरेंट्स आर डूइंग। क्या ब्लंडर आप करते हो भाई? पहला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम डू 15 क्वेश्चन, गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान के भरोसे। थ्रू आउट द लाइफ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बाकी थ्रू आउट द ईयर, वेरी गुड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू आर गिविंग इन द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम, मेन ब्लंडर सबसे बड़ा। एंड यू पीपल अंडरस्टूड वेरी वेल, 80% ऑफ कंटेंट, 90% इज द स्टैटिक। Okay, current updates for 15 question you are doing. This is the main blunders. Means for 15 question, you totally trust on current affairs and just enter in the examinations. Reason, you are very hurry. Very good. Main reason, another problem in this UPSC preparation, no NCRT book available for technology. So that is the reason. This is again one more problem for the aspirant. They did not identify कि space में पढ़ना है तो space में क्या पढ़ना है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भैया डार्क वेब, डीप वेब कौन पढ़ाएगा? डार्क नेट कौन पढ़ाएगा, जिसमें सारा का सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है? अभी तक कोई नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन लोग बोलेंगे। करंट अफेयर्स आप अपनी किताब उठा के देखो तो 6th एडिशन से ही मैंने डार्क वेब, डार्क नेट लिखा हुआ है। प्रॉब्लम यही है, अगर आप एक बार बुक उठा लो, डार्क वेब, डार्क नेट मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक आया नहीं, इसलिए करंट अफेयर्स नहीं है। जिस दिन आ जाएगा उस दिन करंट अफेयर्स होगा, जाके जो बच्चा पीछे से पढ़ रहा होगा 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने किताब में डाली, वो कहेगा सर ये तो किताब में ही लिखी थी। तो तुम्हारी किताब बच्चा आगे आने वाले ना 2-3 साल तक के हिसाब से आगे तक का अपडेट किया हुआ है। जो तुम किसी दिन अपडेट बोलोगे ना, वो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। अब नाउ इन द लास्ट, सर सपोर्टिंग बुक टेल मी। तो दो ही बुक्स हैं, एक तो 9-10 की एनसीईआरटी साइंस, आई विल एडवाइस यू लिटिल बिट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यू डू इट, क्योंकि सम टाइम 1-2 क्वेश्चंस आर कमिंग देयर। बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देयर इज नो एनसीईआरटी बुक, आई सजेस्ट यू, जिसके लिए आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, 7th edition of science and technology book webinars session. For that I'm meeting you and you understood the reason why I'm telling you. रेस्ट ये नहीं तो एग्जामिनेशन होने के बाद आप इस बुक से उठा के क्वेश्चन पेपर मिला लेना, उसके बाद आप अपने आप पढ़ोगे। या क्वेश्चन पेपर, जस्ट यू सी द यूपीएससी क्वेश्चन पेपर आफ्टर एंड ऑफ चैप्टर, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू डू द स्टडी ऑफ द चैप्टर्स। Conceptual clarities are very, very important because UPSC prelims is not a fact and figures. If you have an understanding of topic, so easily you can solve your answers. So it needs to be developed the basic understanding. First of the benefit because of concept, because book is totally concept based. Facts I brought it in between if it is relevant to help and prove the concepts. तो मैंने फैक्ट्स अगर लिया भी है बुक में ना, तो कंसेप्ट्स को प्रूफ करने के लिए उस फैक्ट को यूज किया है। नॉट लाइक एज अ साइंटिस्ट, डेफिनेटली इस तरह भी नहीं पढ़ना कि आप वैज्ञानिक बन जाए, क्योंकि वैज्ञानिक के लिए एग्जामिनेशन है ही नहीं। और यूपीएससी मेंशन इट आल्सो गाइस, नॉट नीड टू बी एक्सपर्टाइज्ड। थोड़ा तो स्टैंडर्ड आपको चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी। yourself busy, अगर यू आर गोइंग टू कीप योरसेल्फ बिजी तो फिर आप रिसर्च ही करो। यहाँ पे भी एक अंडरस्टैंडिंग, एंड जनरली अगर यू सी द क्वेश्चन पेपर ना, यूपीएससी मोस्टली आज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आपकी जीवन में इन चीजों का कहाँ कहाँ महत्व है। ओके अगर यूपीएससी ने पूछा भी है ना 2023 भैया कार्बन फाइबर, तो पूछा कार्बन फाइबर का एप्लीकेशन का, ठीक है, ऐसे गाड़ियां हल्की बनाते हैं, ठीक है, इसमें अच्छा खासा प्रेशर रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर के हिसाब से भी इनमें कोई डिफरेंस प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो इन दैट यस टाइम आई टेल यू द न्यू आई ब्रॉट इन दिस बुक। और इसीलिए मैंने 7th एडिशन के लिए उन सारे बच्चों को रिकमेंड किया जिनके पास 1 से लेकर 6th एडिशन की कोई भी बुक हो। पहले क्या होता था, अगर किसी के पास 5th एडिशन की बुक है उसको मैं 6 मना कर देता था, नहीं यार पैसे वेस्ट मत करो। लेकिन 7th एडिशन आई एडवाइस टू एवरीवन, 7th एडिशन आई एडवाइस टू एवरीवन। व्हाई 7th एडिशन एडवाइस एवरीवन? क्योंकि 7th एडिशन एक नई चीज आई है जिसमें इंफोग्राफिक्स बहुत मेहनत हुई है, इसलिए मैंने ये बुक हर किसी को रिकमेंड किया। बुक्स बिकम सो मच इजी एंड वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो। ओके दिस इज द रीजन दिस 7th एडिशन आई रिकमेंडेड टू एवरीवन। तो एनी बडी हैव, नहीं तो अमूमन जिनके पास 5 होता है उनको 6 के लिए मैं मना कर देता था। इस बार मैंने सबको बोला है, सबको लेना है, उसके बाद फिर आप 8 वेट देखना नहीं देखना, लेकिन यहां तक तो लेना ही लेना है। ऑन इन्फोग्राफिक्स में वेरियस डायमेंशन आई ट्राई टू कवर, जो आपको यूपीएससी मेंस के लिए जरूरत हो जाएगा। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डायमेनिकल, जितने भी डायमेंशन होते हैं सब मैंने कवर किया। प्रैक्टिस पेपर्स मैंने यूपीएससी के जरूर दिए हैं प्रीलिम्स और मेंस के। मेनी पीपल आर गोइंग टू भाई मार्केट वाले क्वेश्चन पेपर लगाते हो,
है ना, जो कि कंटेंट डेवलपर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने खुद लिख के बना दिया द क्वेश्चन पेपर दैट इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। दिस अ स्कैन कोड, क्यूआर कोड, अगर नहीं है तो बुक देख लेना, इन्फोग्राफिक्स वगैरह दिया है, ठीक है। दैट इज द इवन दोस आई ट्राई टू गिव यू इन अ सिंपल वे। अगली बार, हर बार कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा करने के, कुछ नया करने के लिए, जिससे ये बुक जो है, अब तो फिलहाल इट इज रीच्ड ऑन ईच एंड एवरी विलेजेस। समय लगा लेकिन लोगों ने भरोसा किया। उस भरोसे को पहुंचाते पहुंचाते मुझे 7 साल लगे, बट डोंट वरी, विद टाइम इट विल बी, इट विल गिव द वंडरफुल रिस्पॉन्स। ओके, और लोग इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। और आपका जो सजेशन है दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने बोला सर कुछ इन्फोग्राफिक्स करो, कुछ कलर करो, बुक को और अट्रैक्टिव करो, बुक को थोड़ी पतली करो, हर चीज इसमें मैंने कर दी है। और 72 पेजेस की तो मैंने फोटोग्राफ दी है, यानी 72 पेजेस तो पिक्चर पिक्चर है, वो कम कर दो तो बुक और पतली हो जाती है। तो बुक को वी हैव टू रिड्यूस अ लॉट इन दिस पेजेस। ओके एवरीवन, बहुत कुछ हुआ है। तो बाकी इसके अलावा अगर यू पीपल हैव एनी क्वेरीज तो यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू टेक इट। थैंक यू एवरीवन, माय Well, पार्ट इज ओवर। sir, we will take now questions from the aspirants. यस प्लीज। So, sir, going with the first question, Praveen has asked how to answer questions related to cryptocurrency, which is an integration of economics and technology. अब दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू, एनी ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं ना, उसको इंटरडिसिप्लिनरी होना ही पड़ेगा। वो इंटरडिसिप्लिनरी के लिए मैंने वो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस खोले थे। अब क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी को इकोनॉमिक लॉ के थ्रू भी होगा। और अगर क्रिप्टो करेंसी को जनरेट तो टेक्नोलॉजी से करते हैं ना, तो ये तो आपको पढ़ते समय मैंने बुक में साफ साफ लिखा कि क्रिप्टो करेंसी की जो, जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी आप पढ़ते हो तो आप नितिन की बुक देख लो, आप रमेश सिंह सर की बुक देख लो, तो नितिन सर इन वाली बुक में उन्होंने उसके इकोनॉमिकल डायमेंशंस को लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने उसका टेक्निकल पार्ट को लिखा हुआ, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी अगर अगर बनानी है, इसमें बिटकॉइंस की बात हो रही है, रैंसमवेयर वाला जो इशू हुआ था 2016-17 में, तो मैंने वहां लिखा। तो इसको आपको समझने के लिए आपको दोनों चीजें साथ साथ देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर दूसरी चीज ये होती है कि बुक को देखोगे तो बुक में मैंने इंटरडिसिप्लिनरी खुद किया हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी जो बनाते हैं वो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जहां पर हम डेटा माइनिंग करते हैं। तो डेटा माइनिंग तो हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जहां पर कंपनियां होती हैं वो बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स बनाती हैं और बिटकॉइंस वगैरह जनरेट करती हैं, लेकिन इसका रेगुलेशन और कंट्रोल तो हमारी इकोनॉमी हो गई ना, जो हमारी सरकार करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों के दोनों इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब, एक बात और है श्रीकांत जी, मैं एक बात और बताता हूँ, किस बच्चे ने बोला ये क्वेश्चन पूछा है? So, Praveen, प्रवीण। प्रवीण, Praveen. देखो मैं एक बात बताता हूँ, सुनो बच्चा। सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी आप ना बिगनर हो, अभी आपको ना क्रिप्टो करेंसी एज ए साइंस एंड टेक में मिल रहा हो, क्रिप्टो करेंसी अभी आपको इकोनॉमी में मिलेगा, उसके बाद ही आप जोड़ पाओगे। किसी भी बिगनर को ये नहीं सोचना है कि पहले दिन आप उसको इंटरडिसिप्लिनरी करोगे। ओके, पहले दिन इंटरडिसिप्लिनरी होगा ही नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी होने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो। जैसी ही नॉलेज लोगे तो समझ में आएगा यार, क्रिप्टो करेंसी तो साइंस एंड टेक में भी आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी में भी आ रहा है, फिर वो अपने आप जुड़ने लगेगा, ठीक है। इवन जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं, चलो मैं तुम्हें साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ, मैं लैपटॉप पे लैपटॉप पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप पे मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, तो लैपटॉप अभी तो बहुत सारे डायमेंशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अभी नहीं आएगा शुरुआत में, बिगनर्स के साथ थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा वेट करो। आफ्टर गेटिंग अ नॉलेज यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं बता रहा हूँ लैपटॉप देखो, तो लैपटॉप एक टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रख लिया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी, लैपटॉप को चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर जलाते हो तो क्या होता है? इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मेजोस कोयला होता है। दूसरा, ये अगर जो लैपटॉप चल रहा है, इसके रेडिएशन से जो मेरे फेस की आ रहे हैं, वो हेल्थ भी हो गया। यानी किसी भी चीजों को आपको डायमेंशन के साथ जोड़ना पड़ेगा, कितने डायमेंशन बनते हैं। हो सकता है अभी आप बिगनर इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। जब कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका सोशल डायमेंशन क्या होता है, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या होता है, इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन क्या होता है, हेल्थ डायमेंशन क्या होता है, ये पांचों डायमेंशन को लेने के बाद चीजें कंप्लीट होती हैं। अभी आप बिगनर इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी नॉलेज ले लो, और मेरे ख्याल से एक आंसर तो खुद समझ में आ गया होगा कि सर किसी भी कॉन्सेप्ट पे पीछे 5 डायमेंशन होते हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, हेल्थ। ये क्वेश्चन सोचना शुरू कर दो। So, for a Minas is a 2026 aspirant, is asking which edition should I buy? फॉर 2026 एस्पिरेंट विच Edition. He's understanding कि एडिशन what तो, is. सी एडिशन तो आई विल एडवाइज अ 7 इज द Yeah. बेस्ट वन,
because I told you in this entire discussion, for all the aspirant, those have a 1 to 6, any of the editions. I recommended especially to everyone, kindly go and see the 7th edition book. और उसके बाद मेरे ख्याल से नहीं जरूरत है 8th edition की, क्योंकि बहुत ज्यादा 7 to 8 में चेंजेस नहीं होने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ. अगर यू हैव अ 7th edition बुक तो इट विल बी एनफ, क्योंकि इन्फोग्राफिक्स में कुछ इन्फोग्राफिक्स शायद थोड़े चेंज होंगे, लेकिन 70 इन्फोग्राफिक्स में डोंट थिंक जो सारे चेंज हो जाएंगे, ज्यादा 20-30%. अब अगर फॉर 2026 यू आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, तो स्टडी का वेट थोड़ी ना करोगे, ले लो. बहुत ज्यादा चेंजेस होगा तो 2-3 साल बाद देख लेंगे. अभी तो 2026 में यू ऑलरेडी हैव अ 3 इयर्स ना, तो Right. यू कैन नॉट वेट, यू शुड go with the 7th editions. Dheeraj is asking, please suggest some topics which will become a game changer in the prelims 2024 as well as mains. See, 4 chapters are very important for examinations. And if you see the question paper, if you see the books now, 4 chapters have consumed the maximum number of pages also. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. अभी देख लो, 11 chapter has I told you. Those people are going to prepare entire science and technology, उनको 11 chapter पढ़ना है. और जो शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन इस 15 क्वेश्चन में से भी 10 आ जाते हैं, वो है बच्चा 4 चैप्टर. वन इज द एनर्जी, सेकंड इज द स्पेस टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ इज द बायोटेक्नोलॉजी. सॉरी, फोर्थ इज अ बायोटेक्नोलॉजी. फिर से बोल देता हूँ, एनर्जी, स्पेस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी. ये 4 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल पार्टिकल फिजिक्स से यूपीएससी ने पिछले 6-7 साल से देना शुरू किया है. तो एक क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो पार्टिकल फिजिक्स भी पकड़ लो. यानी 11 में से 5 चैप्टर मैं रिकमेंड करूंगा एवरी. Right. Thank you, sir. Sir, next question is from Minas only. Is it compulsory to study 11th and 12th NCERT physics and chemistry book in depth for science and technology? नेवर, नेवर, never. Only and only 9th and 10th standard of NCERT science book I recommend to everyone. It will be enough to understand your technology वाला part. और बाय द वे, द प्योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आज तक एक न्यूमेरिकल तक तो यूपीएससी ने दिया नहीं. आप क्यों जाके 11-12 पढ़ोगे? और 11-12 वैसे भी बेसिक होता है किसके लिए? मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए. तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 9-10 के स्टैंडर्ड की साइंस बुक बोलता हूँ, जहाँ पे बेसिक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, और उसका सीधा कहता हूँ 7th एडिशन पे आ जाओ. इसीलिए मैंने 2 ही चीजें बोली. और साइंस एंड टेक में तो कुछ लिखा भी नहीं है कहीं किसी जगह पे, तो आपको इसके अलावा कुछ और सोर्स भी नहीं है. और क्वेश्चन पेपर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं है. Thank you, sir. Aditya is asking how to use newspapers for science and technology. न्यूज़पेपर फॉर द बिगनर्स आई विल नॉट एडवाइज, क्योंकि न्यूज़पेपर में दे आर गोइंग टू कंज्यूम मैक्सिमम टाइम. ओके और उसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको बेसिक नहीं पता है, तो न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता. एक सबसे बड़ा ब्लंडर जो न्यू जनरेशन के वो बच्चे हैं, जो न्यू बिगनर्स हैं, वो कर रहे हैं. वो लोग की बात सुन लेते हैं कि न्यूज़पेपर करना शुरू कर देते हैं. तो न्यूज़पेपर तो किसी भी बिगनर को 6 महीने तक तो करना ही नहीं चाहिए, जब तक वो स्टैटिक चीजें ना पढ़ ले. सैटेलाइट पता नहीं है, शटल पता नहीं, गगनयान का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा. गगनयान का पहला ट्रायल अभी जो 1-2 महीने पहले हुआ था, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. इवन इकोनॉमी का जीडीपी समझ नहीं आ रहा, इन्फ्लेशन का केस पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर जितने भी जो बिगनर्स है ना, 6 महीने रुक जाओ बच्चों. या तो मैं कहता हूं, अगर तुमसे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो कोई मैगजीन्स ले लो, उसके थ्रू चलते चलो करंट अफेयर्स के लिए, और जिसमें जितने टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो उसको देखते चलो, बाद में करंट अफेयर्स करते जाना. लेकिन हाँ, अगर किसी का ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुका है, बेसिक चीजें तैयार हैं, उनके लिए यह है कि मंडे का जो साइंस टेक आता है उसमें एक चीज ध्यान रखना, रिसर्च की चीजों पर मत जाना, सिर्फ एप्लीकेशन पर जाना. जैसे मान लो क्वांटम डॉट आ रहा है, मान लो क्वांटम डॉट है, तो क्वांटम डॉट ठीक है, 2023 का नोबेल प्राइज रहा है केमिस्ट्री का, तो क्वांटम डॉट है ना. यहां तक कि साइंटिस्ट के नाम और ईयर भी नहीं आते, और उनके क्या एप्लीकेशंस, आप उसी पे चले जाओ. तो यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट पे जाना, रिसर्च में जाना, उन्होंने क्वांटम डॉट्स कैसे बनाया, क्वांटम डॉट्स को ले लेकर किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, इस पे क्वेश्चन है. हाँ, क्वांटम डॉट्स को ह्यूमन की लाइफ में कैसे उसका इंपॉर्टेंस हो सकता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, आप सिर्फ एप्लीकेशन पे रहिए. ये यूपीएससी का इतिहास है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन ही पूछा, टेक्निकल पूछा ही नहीं है. Thank you, sir. Moving on, Tenmozi is asking how many months current affairs required for science and technology. 10 months, 10 months, ओनली 10 months. और बाय द वे 10 months भी इतना फ्रूटफुल नहीं हो रहा आपके पेपर में. 20% ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द करंट अफेयर्स ओनली. 10 to 20%, 80% तो स्टार्ट ही किया रहा है. ओके, One of the 10 months. aspirants is asking, being a beginner in second year, how should they prepare? What should be the strategy? अब बिगनर्स फॉर द स्ट्रैटेजी के लिए तो सबसे पहले यू शुड, अगर इसका मतलब आपने कुछ नहीं, अगर आप शुरू से शुरू करने जा रहे हो, तो यू मस्ट हैव टू कीप द क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस फर्स्ट. क्योंकि क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस ये है जो आपको आपको खोलने वाला, आपकी आंख खोलने वाला, जो आपको समझाने वाला यूपीएससी में क्या चाहिए. उसके बाद यू स्टार्ट द बेसिक प्रिपरेशन, जिसको एनसीईआरटी किताबें कहते हैं, और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी होती हैं. उसके बाद आपको जाके स्टैंडर्ड किताबों पे आना पड़ेगा.
अब ऐसे मैग्रा हिल जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ना, वो आपको उसके ना वो छोटे छोटे क्रक्स बना के दे रहा है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर मान लो एनसीईआरटी से बचना चाहते हैं तो आप वहां भी जा सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको एनसीईआरटी में ज्यादा दिक्कत आ रही है, सर एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप क्रक्स ले लो, वहां पे भी आपको वो काम कर जाएगा। Okay, उसके sir. बाद One of the aspects is asking, is note making compulsory for science and tech? नोट्स मेकिंग ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बट नोट्स हमेशा जितना छोटा उतना अच्छा, क्योंकि लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम रिवीजन भी हो जाए। नोट्स हमेशा जो हम अपने मन से बनाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, और वो लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में हमें रिवीजन में हेल्प करता है। किताबें आप बुक से पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें, पूरी किताब को बैठ के मत बनाएं, क्योंकि आप एक किताब का नोट्स बनाने में अगर पूरा टाइम लेंगे, पूरी किताब को छापेंगे तो 1 साल लग जाएगा लक्ष्मीकांत सर की किताब के नोट्स बनाने में। उसके बाद आप मेरी नोट्स बनाएंगे या किसी और की बनाएंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो नोट्स हमेशा बनाइए, वो अच्छा है। इवन मैं तो कहता हूँ जो क्लासरूम में जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं ना, उन्हीं के क्लास के डिस्कशंस के नोट्स बनाइए। कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो स्टिकी नोट्स उसमें चिपका दीजिए, और जो नया कुछ अपडेट आता है तो एक पेज ऐड ऑन कर दीजिए। और किताब को कोशिश कीजिए अंडरलाइन करके और उसको हाइलाइटर से पढ़ने की, क्योंकि इससे आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कभी बड़े नोट्स नहीं बनाएंगे। अब 600 Right. पन्ने की रवि ग्रे सर की किताब है, 500, अब 600 पन्ने की साइंस टेक का नोट्स बना रहे हैं, आपने अपनी एनर्जी बर्बाद कर दी। अगर आप 600 पन्ने के नोट्स को 50 पन्ने में बनाना जानते हैं, टू द पॉइंट, वो आपके लिए बेस्ट है। Thanks, लास्ट sir, for the मोमेंट relevant insight, sir. ऑफ Next question is Pratmesh is asking, can you suggest good books for zoology optional as well? जोलॉजी ऑप्शन के लिए देखो, आई आई नॉट टेल यू एनीथिंग। इनवर्टिब्रेट्स के लिए आप चाहो तो कोटपाल सीरीजेस आती हैं, दैट इज बेस्ट। और यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब जोलॉजी ऑप्शंस के लिए, अब एक जमाना था जब कभी मैं जोलॉजी ऑप्शन पढ़ाता था। अब टुडे आई कैन नॉट टेल यू द प्रॉपर बुक्स फॉर जोलॉजी ऑप्शन। साइंस एंड टेक में एनी हेल्प यू वांट आई कैन टेल यू फॉर द जनरल One स्टडी। more question for current affairs is, how should we cover current affairs daily or weekly or monthly? आ That's the pattern. वीकली विल बी Hmm. द बेस्ट, वीकली विल बी द बेस्ट। या मैं ये बोलूंगा करंट अफेयर्स के लिए कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 1 से 2 दिन बना लीजिए कि उस दिन हम करंट अफेयर्स ही करेंगे। अब ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर चॉइस। कुछ बच्चे हैं जो हर दिन 1 1 घंटे 2 2 घंटे करंट्स लेके चलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो हफ्ते में 1 1.5 दिन निकाल लेते हैं, 1.5 डे निकाल लेते हैं, वो 3 3 घंटे का एवरेज करके कर देते हैं। तो चॉइस इज योर्स, वो कुछ नहीं, वो आपके ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है, पर पढ़ना तो है। The last two questions that we will take is how to read. Aditya is asking how to read science and technology book effectively. इफेक्टिवली, इफेक्टिवली के लिए तो इफेक्टिवली लिखी हुई है, कम से कम चीजें लिखी गई हैं फ्रॉम द बिगनिंग यू स्टार्ट। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस ऑर्डर में लिखी है आप उस ऑर्डर से पढ़ो। पहला चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया लिखा है, उसमें थोड़े हिस्टोरिकल चीजें समझाई हैं कि एंशियंट इंडिया में क्या हुआ, मेडावल में क्या हुआ। उसके बाद मॉडर्न में हमारे इंडिया के कौन कौन से साइंटिस्ट आए, इंडिया की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो चल रही हैं। उसके बाद मैंने एनर्जी लिखी, एनर्जी के बाद मैंने स्पेस लिखा, स्पेस के बाद आईसीटी लिखा। तो रीजन ये है कि इस ऑर्डर में चलो, क्योंकि जब स्पेस जब एनर्जी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो फ्यूल लगता है वो एनर्जी वाले चैप्टर के बेसिस पे ही समझाया गया है कि भैया देखो क्रायोजेनिक इंजन का फ्यूल जो होता है वो लिक्विड नेचर का रखते हैं, जबकि वो गैसेस नेचर का फ्यूल रखा गया। तो एनर्जी के बाद स्पेस पढ़ो, स्पेस के बाद जब आप सैटेलाइट भेज देते हो तब आपको समझ में आता है अच्छा अच्छा अब हमारा डीटीएच चलता है, यानी आईसीटी शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने बुक में आईसीटी लिखा है। आईसीटी लिखने के बाद मैंने डिफेंस लिखा, भैया जब सैटेलाइट आप लगा देते हो तब तो जाके देखते हो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, यानी उसका बाद डिफेंस पढ़ो। यानी बुक को उसी ऑर्डर में लिखा गया है, यानी सीधा सीधा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे पढ़े, जिस ऑर्डर में बुक लिखी गई उसी ऑर्डर में पढ़ो। पीछे का चैप्टर आगे वाले को, आगे वाले का आगे वाले को। प्रॉब्लम क्या, आप स्पेस पढ़ गए, एनर्जी पता ही नहीं है आपको। स्पेस में क्रायोजेनिक में हमने गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल को लिक्विड में क्यों रखा, ये इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपने पहले एनर्जी नहीं पढ़ी। तो ऑर्डर उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, और उसी ऑर्डर में मैंने आपको 11 चैप्टर्स के नाम भी बताए। Right. Thank you, sir. The last question is Gauri is asking, please tell me anthropology or sociology, which optional is best for science students' background? For this purposes, other McGraw-Hill will call the other faculties as a part of webinar. You don't miss it. The special of sociology, the author will come for all of you. जिन्हें सोशल इशू लिखा हो, उनका सोशलॉजी में ऑप्शन होगा। इन दैट केसेस आई वुड लाइक टू बी साइलेंट, क्योंकि अच्छा होगा कि आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से उस चीज की बात करें। 20 years आई हैव गिवन द साइंस एंड टेक, तो अच्छा लगेगा कि साइंस एंड टेक एनवायरमेंट में हम मुझसे सुने। बट सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के लिए आई विल बी साइलेंट। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि सोशोलॉजी इज द ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी भी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे भी लेते हैं और साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे भी लेते हैं। आप सब भी साइंस एंड टेक वैसे ही पढ़िए जैसे बुक
में लिखा गया उसी ऑर्डर में। अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट वेलकम, मैग्रा हिल विल मीट विद ऑल ऑफ यू ऑन द अदर प्लेटफॉर्म, अदर वेबिनार सेशन, जो आप वहां पे उनसे बात करेंगे। साइंस अटैक में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत ही बेसिक किताब लिखी है और वहां जीरो से उठाया। मेरे दिमाग में हमेशा था किताब लिखते समय कि जो बच्चे नॉन साइंस वाले हैं ना, उनको साइंस अटैक कैसे समझानी, मैंने वो किया हुआ है। गॉट इट। और साइंस एंड टेक वालों को भी साइंस कितनी आती है, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद साइंस वालों को भी समझ में आ जाता नहीं, दे आर ऑल्सो भी ओवर कॉन्फिडेंट, उनको भी समझ में आता, उनको भी मैंने जीरो से ही समझाया है। क्योंकि आईआईटी दिल्ली के अंदर मैंने पूछा भैया करंट कितनी तरह का होता है, 80% बच्चों ने जवाब नहीं दिया कि एसी और डीसी तरह का। ठीक है। सर एक क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है, एनसीईआरटी ऑफ विच क्लासेस आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटीज बिगनर? एवरी सब्जेक्ट्स हैव अ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हिस्ट्री में लोग कहते हैं कि 6 to 12 कर लो, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। ज्योग्राफी में तो मैं खुद कहूंगा 6 to 12 कर लो, काफी अच्छी है, उससे काफी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन जाते हैं। साइंस में आई विल एडवाइस यू 9 और 10 कर लो। इकोनॉमी में लोग कहते हैं मैक्रो माइक्रो दो इकोनॉमी होती है, लोग कहते हैं एक पढ़ो एक दूसरी मत पढ़ो, तो इकोनॉमी में 9, 10 कर डालो, काम हो जाता है। और सोशल इशू के लिए भी जो सोसाइटी वाला पार्ट है 9, 10, 11, 12 कर लो, हो जाता है। पर साइंस में ओनली 9, 10, 10, साइंस में आई विल नेवर एडवाइज द 11 और 12, वो थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाता। राइट सर, environment के लिए one of the students is asking which book is relevant. Maybe you can give a short brief, sir. देखो इन्वायरमेंट के लिए मैं जरूर आऊंगा, किसी दिन आप सबसे मिलूंगा और स्पेशल 1 घंटे का वेबिनार लूंगा। इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा पंगा क्या है कि इन्वायरमेंट में आप समझ नहीं पा रहे हो कर क्या रहे हो। अब जैसे इन्वायरमेंट में मैंने 3rd एडिशन की बुक दी, अगर आपने 2nd एडिशन की बुक किसी के पास होगी तो उठाना और 2023 के पेपर देखना, 7 क्वेश्चन सीधा उसी से आएंगे। इवन बहुत सारी और भी बुक्स हैं, आई नॉट टेक द नेम ऑफ अदर वन, आप उनसे मिला के देख लो, 7 क्वेश्चन इसी से आए। अब जैसे परमा कल्चर है, किसी बुक में नहीं लिखा है, मैग्रा की 3rd एडिशन की बुक में, थर्ड छोड़ो सेकंड में लिखा हुआ है। जेनोबायोटिक्स है, कहीं नहीं लिखा हुआ, मैग्रा की 2nd एडिशन की बुक में लिखा हुआ। सेकंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 23 के क्वेश्चंस के पेपर उससे हैं। ओके। और 3rd एडिशन में तो रिपीटेड है, थर्ड में तो प्रूफ हो गया कि वो क्वेश्चन आए हैं। अब आप देखो ब्लू कार्बन आपकी 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 जो मैग्रा की बुक वो लिखी हुई है। मैं देखो इन्वायरमेंट के लिए जो सीधे बोलूंगा, इन्वायरमेंट के लिए भी कोई ऑथेंटिक बुक अभी भी कोई एनसीईआरटी की ऐसी नहीं है जो अवेलेबल हो। मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स दे आर गोइंग टू फॉलो द 12th वाली, जो लास्ट में 4 चैप्टर इकोलॉजी इन्वायरमेंट का, उसको पढ़ते हैं, कहते हैं उससे हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता है। आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट भी वैसे ही स्टैटिकली पढ़ना है। अब आपके पेपर में वो इकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से पूछ रहा है इनमें से कौन से डिकम्पोजर्स हैं। ओके, वो ऑप्शन में इधर है बैक्टीरिया है, फंगी और वायरस है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं ये करंट अफेयर्स है। ये भी तो स्टैटिक की है ना। प्रॉब्लम क्या है, ओके वट एवर दो स्टूडेंट विल आस्क मी, इन द केस ऑफ साइंस एंड टेक हो या इन्वायरमेंट हो, इन दोनों में कोई एनसीईआरटी की प्रॉपर बुक है नहीं। और दिस इज द रीजन स्टूडेंट्स मोस्टली मिसगाइडेड हियर एंड मोस्टली दे वर वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम। इफ एनी 100 पेज ऑफ करंट अफेयर्स बुक्स आर कमिंग या नोट्स आर कमिंग ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे आर रीडिंग इट, और यहीं पर उनका पूरा का पूरा स्टैटिक गड़बड़ होता है। तो मैं यहाँ पे भी एक ही एडवाइस करूंगा, जैसे कि साइंस एंड टेक राइट नाउ इट्स गॉट वेरी पॉपुलर और काफी सक्सेसफुल बुक हुई है। और इन्वायरमेंट की बुक जो अभी काफी ऑफ द एस्पिरेंट्स को दे स्टिल डिड नॉट नो कि इन्वायरमेंट के लिए मेरी बुक आती है, जिसमें ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे हैं, 7 क्वेश्चन जो 23 के थे वो उसी बुक से थे। मैं इसको चैलेंज भी कर सकता हूँ, आप पेपर उठाइए और वो सारे टॉपिक्स आप उठाइए, आपको आपकी आपकी इन्वायरमेंट के बुक में मिल जाएगा। जबकि और बाकी कोचिंग बाकी बुक्स में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पेपर आने के बाद भी उन चीज़ों को उसके बाद भी ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ यहाँ पे पहले से ऐड है। तो इतना ही बोलूंगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा लोगों को भाई भरोसा हो रहा है कि दैट रवि अग्रड़ी सर है ऑल्सो रिटन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी मैंने एकदम जीरो से उठाया है। ओके, आप उसमें जाओ। ओके, और उसको स्टार्ट करो एकदम। आपको वहां पर एनसीईआरटी की भी कोई जरूरत नहीं है, इवन आइदर यू आर गोइंग फॉर साइंस एंड टेक या इन्वायरमेंट, दोनों में एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं है। यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। इन्वायरमेंट तो मैंने एक डिजास्टर मैनेजमेंट भी लिखा हुआ लास्ट में। ओके, और आगे फ्यूचर में आई हैव अ प्लानिंग टू गिव यू एग्रीकल्चर ऑल्सो, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं है अवेलेबल मार्केट में। मैंने उसको भी अच्छा काफी कोशिश किया, मैंने जो भी किताबें लिखी हैं, जहां जहां बच्चों ने मुझे जिस जिस सब्जेक्ट के लिए फोर्स किया वही लिखा। और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी आपको आगे फ्यूचर में दे दूंगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि इन्वायरमेंट का 3rd एडिशन आप देख सकते हो। इट्स अ वंडरफुल बुक, और पहले एक बार देख लेना पहले बुक। और इवन लकली आपको बताऊं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया का वो रिव्यू पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स का रिव्यू पढ़ो, इस सब में अगर देखो तो उन्होंने इन्वायरमेंट की बुक में एक आध बार तो उन्होंने साइंस एंड टेक बुक मेरी मिस कर दी है। ओके, इट्स द बेस्ट बुक फॉर यूपीएससी सेगमेंट।
बट उन्होंने इन्वायरमेंट में हमेशा हमेशा उसी बुक को रिव्यू में नंबर 1 पर रखा है। इवन मेनी अदर बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, जबकि मेरे को हिंदुस्तान टाइम्स का सर्वे नहीं पता, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे नहीं पता, इवन जितने भी नवभारत टाइम्स के सर्वे नहीं पता, पर उन सब ने इन्वायरमेंट के बुक में वही मैकग्रा हिल की जो सेकंड एडिशन की बुक थी उन्होंने लिखी है, उन्होंने रखी है। आप उसे गूगल पे जाओगे तो वो आपको खुद ही बता देगा दैट दिस इज अ हाईली सक्सेसफुल वेयर यूपीएससी डायरेक्टली आस्क्स द मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो इन्वायरमेंट में भी आप जाओ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको वो पढ़ना चाहिए। बाकी इन्वायरमेंट Thank you. एक बार फिर मिलेंगे आपसे कभी किसी दिन। इन दैट केस आई विल गो इन डिटेल ऑफ द इन्वायरमेंट, हाउ टू डू इन्वायरमेंट, जस्ट लाइक इन द केस इन दिस टुडे सेशन आई डिस्कस विथ यू हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द साइंस एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग इन द केस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ एग्जामिनेशंस। Thank you, sir, for this enriching session. I hope this session will help the aspirants prepare for the exam. And there will be a webinar recording on the Mc Graw Hill Edge platform for students who have missed or would like to have a relook at this. Thanks, all of you, and have a great Sunday. Thank you, Shrikant, and thank you all of you, and God bless you all for your examination. Thank you.